चेक इन हो गया है और बहुत कुछ बदल भी चुका है हॉस्टल अब। तो उन्होंने पहचाने भी नहीं मुझे, ऑफ कोर्स नहीं पहचानते, लेकिन मैंने पहचान लिया उनको। तो अंदर वाला बेड मिला है मेरे को, सेम बेड जिसके ऊपर मैं फ़र्स्ट टाइम आया था तब रुका था। बस उसी सेम बेड पे अब फिर से एक बार सोएंगे, वरना फिर यहाँ पर ये बाहर भी बेड्स हैं तो हो सकता है इसको भी देख लें एक बार। कल का मेरा ये वाला बेड है बाहर वाला। तो भाई हॉस्टल में लोगों से मिलते से बातचीत चालू हो गई है, और वही इस हॉस्टल में कुछ स्पेशल है यार। मतलब ऐसे ही सब कुछ आउटडोर में है तो कोई अंदर जाके ऐसा बैठ नहीं सकता, अंदर गर्मी होने लगेगी। तो उन्होंने हमको बताया कि भैया आप यहाँ पे आओ और यहाँ से कुछ खाने के लिए ले लो। तो यहाँ पर ये ग्रिल्ड चिकन और ग्रिल्ड वगैरह, पोर्क और बीफ वगैरह है। तो वहाँ से मैंने ग्रिल्ड चिकन ले लिया सिर्फ 24 बाट्स में। अब देखते हैं इससे आज पेट भरता है क्या, वरना फिर कुछ और भी लेने आ जाएंगे। इधर पास में पीछे नाइट मार्केट है, तो वो सामने आपको लाइट दिख रही होगी थोड़ी बहुत, उस साइड में जहाँ पे चल के जाना है तो उधर भी नाइट मार्केट है। और अभी तो हम लोग 7-Eleven पे आए हैं, तो सब जगह देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ मिल जाए खाने का, और फिर हॉस्टल में जाके अपना आराम करेंगे। बहुत थक गए यार वाकई में। सबसे ज़्यादा बेकार तो उसमें लगा कि बस लेट हो गई, 8-10 घंटे की बस। अब जाके पूरे 12 घंटे हो गए, 8 बज गई अभी सुबह। मैं तो सुबह 7 बजे से उठा हूँ, अब इधर सोऊंगा आराम से यार। पता नहीं, मतलब ये हॉस्टल के अंदर बात ही अलग है। जैसे ही अंदर गए वैसे ही लोग बाग मिलने आ गए, बात करने आ गए, और फिर अभी थोड़ी देर से हम लोग फिर से जाएंगे, कोई ना कोई मिल जाएगा, तो वो बहुत अच्छी बात है यार। बाकी हॉस्टल में ऐसा नहीं हो रहा था, जैसे अयोध्या में भी ऐसा नहीं हो रहा था, पटाया में भी ऐसा नहीं हो रहा था। पटाया में तो बिल्कुल मैं बोर हो गया था, सिर्फ नचिकेत था इसलिए टाइम पास हो रहा था मेरा, वरना मैं तो निकल जाता उस जगह से, भले भी 5 दिन की बुकिंग के पैसे जाए। 1 दिन तो वैसे भी मैं छोड़ के आया बुकिंग का। तो पता नहीं यार, पटाया में तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। अभी हम लोग वही बात कर रहे थे, 2-3 लोग थे, लुई, मैं और एक और कोई बंदा था स्लोवाकिया से। तो वही बातें चल रही थी कि यार पटाया क्यों गए तुम लोग। हम दोनों ने गलती कर दी भाई, पटाया जाके बिल्कुल मज़ा नहीं आया। एक ट्रैवलर के लिए तो बिल्कुल मज़े वाली बात नहीं है वहाँ पे। बाकी एज ए टूरिस्ट अगर आप जाना चाहो, टाइम पास करना है, शॉपिंग करना है, बार वगैरह में जाना है, तो ज़रूर जाना चाहिए। वरना फिर ऐसी जगह जहाँ पर कुछ कल्चर है यहाँ पे ओरिजिनल थाईलैंड का, तो वो फिर देखने में मज़ा आता है। तो चलो अब तो सुबह ही मिलते हैं यार। तो भाई सुबह हो चुकी है, अगला दिन आ गया है, और सुबह उठते से हमको देखने को मिला है कि भाई यहाँ पे एक सांप आ गया है। तो सामने प्रक्रिया चालू है उसको भगाने की। अब पास तो जा नहीं रहे, पर हम तीनों के तीनों ने देखा है इसको, सांप को। और अब पब्लिक जमा हो रही है। Thailand. No, Myanmar. No. Call. Chai, wait, Peter. Peter, I can call. No problem. Wait, no. Couldn't I come here? You have it. Yeah. So don't do. Wait. You can call because after they take the snake and they bring back countryside. So let Peter. Yeah, because it come back. No touch. Yeah, I don't want to come back. I have to stay here one more night. No touch. Let it quiet. No, let it quiet. Call this up. Peter. Me couldn't I come? Yeah, I know. Okay, we can do, but here they You take. come? Not come? Yeah. Oh, Maybe 20 minutes, 30 minutes come. come on. But let it quiet so we don't move. Peter, money. Yeah. Come here. Peter, don't touch it. My land. Yeah, don't touch it. Yeah, But surely it's not poisonous. Most of them are not poisonous. I will not take risk. We see some, but you see if they have like a triangle face or difference. But I didn't see face. I just lie down and I look what the fuck is there. I look better fuck. Nice cover. Yeah. Oh. Yeah, come here till then.
Dogs, cat. Yeah. Can you go film it? Huh? Can you go and film it? No. Yeah. I don't risk my life. Yeah. Slept with snake before? No. You see this one? And look on the top. Yeah. I sleep with it. Make one see. In city, I never see one dangerous. Jungle have some poison, but city no. But wait, ici, viens là. Vas-y, come on. I 1, 2, 3. sleeping. You cannot see, it's too high. Go, go, go. But so have Thai people which are snake people have Like, I cannot see. yeah. Oh, I Um, see. and then they release it in the nature. Yeah. Where is the head? But it's still Oh, I see, I see. You have to pull it the tail to see a head. Yeah. Actually, at this time they will show. You see, I have a storm on rain yesterday, and this disturbs them. Every time we have big storm, have snake maybe get out of their home and then move. And how by the tree, eh? You see it? Yeah, Funny. I was thinking it's from Mutai, the hat what the fighter is having. Yeah, maybe it's just somebody put the Don't try. No. 等一下，它跑了。不会，它睡觉，对，这一会儿它不会跑。 Yeah, 叫人过来 hunter. 抓。 Every So what is he doing? He's big hunter. Yeah. Yeah, this one is the cat of the manager, like she have for this baby cat. And you see she always cat attached. But the two others, they are like 6, 7, have a snake. Holy shit. Yeah, look at that. You follow the pillar, and on the top of the pillar you look at the snake turn 这个上次那个一窝的应该是这儿，我上次都说了，我说不会这这个样，颜色吗？ snake catcher on the wheel. 这个都大一点的。那个上次下雨抓那一场，应该他们都一窝的。 we didn't go so close to check. 不知道在哪里，它的窝应该在 But 这， no, 就在这一 there is 片。 most chances that it's a kind of python, so it's not a very big one. That can be 10 meters long, you know, in Bangkok I see very long one. And this one, no, Maybe they have the old body inside the tube. Yeah, maybe it's 5 that meters. can eat a small animal, but sometimes big animal too, when they are big, can eat big animal. Yeah, I'm But- big animal. Yes, I'm quite big animal. Don't like this, but it's okay. It's cool. If it's moving, I'll be more stressed. No. Maybe Um, stone after my I joint. think Yeah, I when smoke joint. we and- call the guy to come, normally it's like less than 20. Last time they come in 20 minutes, so maybe this time. Here, yeah? Yeah. You live here, yeah? I'm the owner, yeah. Ah, you are the owner, yeah? We are the owner. Ah, okay, Yeah. okay. Nice to meet you, okay. 飞机 No, it's just leaking. but cannot. Hopefully the body is inside of the tube, like you said, really long. Inside the whole tube. तो ऐसा है भाई, सुबह सुबह सांप आ गया है यहाँ पे. Dude, straight away take the rubber gloves. हाँ यार, हाँ भैया, वो जो बंदा है वो सीधा ग्लव्स पहन के आ गया और बोलता है चलो सांप निकालेंगे. फिर सबने आके उसको मना किया कि नहीं नहीं निकालो मत. तो इधर के ओनर है वो आए, उन्होंने बोला निकालो मत, बुलाएंगे उसको रेस्क्यू करने वाले को, वो फिर लेके जाएगा. बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब कर दी भाई साहब ने सुबह सुबह That's आके. how scared I am. That's a good added sound effect for the video. Yes, that's how scared I am. Shitting myself. Yeah. ऐसा है भाई, आपने जो आवाज़ सुनी अब आप समझ जाओ क्या हुआ था. तो अभी तो वही यार हॉस्टल में पीछे बैठे हुए हैं नदी के पास में. ये सांप दिख गया इसलिए थोड़ा सोचा कि वीडियो चालू करता हूँ. अब बताऊँगा आपको हॉस्टल भी.
बस अभी मैंने ये ब्रेकफास्ट किया 7-Eleven से लाया था, चावल और चिकन और बिस्किट लाया था, और इधर से कॉफ़ी ले ली मैंने। कॉफ़ी फ्री है यहाँ पे। अभी तो कहीं घूमने जाने का कोई प्लान नहीं है, आज थोड़ा ऐसा आलस ही आ रहा है। तो दिखाऊंगा आपको हॉस्टल, और उसके बाद कहीं बाहर गया तो वो भी दिखाऊंगा। और अभी तो ये साहब का मेन बाकी है ना, वो दिखाएंगे पहले सबसे। ทุกอยู่ในนั้นเลยไม่รู้คิดว่ามีตัวใหญ่ไหมครับครับเจอตัวเล็กอย่างนี้ไม่ใช่ถ้าเจอตัวเล็กคิดว่าแม่มันจะอยู่ไหมหรือว่าตัวใหญ่ๆจะมีมาอีกไหมช่วงนี้มันจะอยู่หมดครับอ๋อครับมีโอกาส tomorrow you have to see very big tomorrow will come this side and Very big, huh? yeah This maybe father, mother. yeah My friend in house do this. Oh, five. That's big. Every day me. साहब रेस्क्यू करने वाले आ गए हैं भाई, एकदम से आ गए ये लोग। इतने तेज भाग के आए हैं एकदम से, मैं भी डर गया कि क्या हुआ यार। अब सांप निकाल रहे हैं। 5 meters. क्या वजह सांप निकाल लिया इन्होंने, ऐसे ही हाथ में ले อัน जाएंगे। นี้อะไรครับงูเหลือมนะ งูเหลือมครับ Ouais, ici, là, ici. สังเกตยังไงครับ क्या बात है, दिख रहा है भाई आपको साहब? มันจะเป็นแปลกมันเป็นแตกต่างกันตรงหัวนิดหนึง อ๋อ मेरे अंकल बीच में กลัว आ ว่า गए। พอเข้ามาได้เดี๋ยวก็ตัวอื่นเข้ามาอีกได้กลิ่น นี่ ความ นะ เหม็น อยู่น้ำปีมันมาตลอดครับ อ๋อมา ये ตล क्या อด पानी में डाल देगा? ทิ้งไม่ได้ทิ้งเดี๋ยวมันมาอีก सांप पकड़ के ले गया โอ้โห भाई। โชว์ให้ฝรั่งไม่เคยเห็น This is the long. Before the. Oh. คนนู้นเขาอยากเห็นนะเอาไปให้ดูใกล้ๆกันนี่คนนี้ก็เป็นบล็อกเกอร์นี่คนกลางเนี่ยใช่ไหมอายุบล็อกเกอร์ What? ขอบคุณมากเลยครับครับผมครับผม बस भाई अब इससे आगे नहीं जाएंगे हम। ตรงไอ้สันตะข่อยนะครับ อ๋อผมคิดว่าจะมีอีกครับ Finally got rid of it. They should make money on the attraction. Jungle in the city.